Normally we work at only at the body level imbalance, but the root cause of this is in pranic imbalance. In the higher level, mind imbalance. In the mind level, it's called Adhi. Adhi is the stress at the mind level. Tad japaha tadartha bhavanam. By doing the japa, om, 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 क्या होता है? All other thoughts will be brought into a single thought. When you slow down the mind, go to sleep. No sleep, sir. Wakefulness. And mind should expand. India, Uday India। नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ इंटरनेशनल योगा थेरापिस्ट और योगा गुरु, जिनको हम गुरु जी के नाम पे पूरे भारत में जानते हैं और भारत के बाहर भी जानते हैं, हम उनसे जानेंगे अलग अलग विषयों पर। गुरु जी ने उदय इंडिया से बात की है। गुरु जी, आपने अनेक विषय पे जब चर्चा हुई आपसे, आपने बताया कि the root cause of all sort of diseases that is there in India or outside India is because of tension or anger or stress। अब इसमें इस एपिसोड में आप हमको ये बताइए कि अगर हर बीमारी का जड़ स्ट्रेस ही है, तो स्ट्रेस को कैसे हम उससे कैसे छुटकारा मिलेगा? हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस स्ट्रेस। आत्मीय भाई और बहनों, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। तनाव भरित जीवन हो गया है, तो इसका मूल कारण क्या है, इसको हमको समझना है। तो इसका मूल कारण है मनोमय कोश में, मन में। तो हमारा दो शक्ति होना है, वो कम हो गया है। मतलब माइंड शुड बी एबल टू मेक इट फास्टर माइंड, क्विकर माइंड, ब्रिलियंट माइंड, इंटेलिजेंट, फास्टर 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 करना है। नंबर ऑफ थॉट्स पर मिनट it should increase, 5 per minute, 10 per minute, 15 per minute. This is one aspect of development of the mind. The second aspect is calming down the mind, silencing the mind, tranquilizing the mind. Go to deeper and deeper level of silence. From 1000 thoughts per minute to 500 thoughts, 100 thoughts, 5 thoughts, 1 thought, 1 thought in a minute, 1 thought in 5 minutes, 1 thought in 1 hour. This is the way that we have to do. Therefore, there are two dimensions to the mastery. Patanjali said, Yogaha Chitta Vritti Nirodhaha, gain mastery over the mind. Both these things to be done. Unfortunately, the second dimension has been neglected. We all have become very intelligent, brilliant, faster mind, quicker mind, jaldi karo, ye ho gaya. So, because of that, there's a big imbalance. This big imbalance shows up gradually at the prana level, causing imbalance in the prana, and comes down to the body level, causing imbalance between left and the right brain, between autonomic imbalance, endocrine imbalance, and imbalance of the homeostasis, all percolates down. So this imbalance is known as stress. Normally we work at only at the body level imbalance, but the root cause of this is in pranic imbalance. In the higher level, mind imbalance. In the mind level, it's called Adhi. Adhi is the stress at the mind level. That percolates down to the pranic imbalance, comes to the body level. But all we do in the other things only at the body level. We have to work at the mind level. For that, what is to be done? Vasishtha Mahamuni has given us Mana Prashamana Upayaha Yogaha. Yoga is to calm down the mind, silence the mind, tranquil the mind. You should ask, what is to be done? Every day you must sit, stay in that silence, calmness. Choose any thought that you want. If you have Rishta Devata, you take. For example, here now Jagannath Mandir is there. We are having this wonderful thing. Jagannath, Krishna Bhagavan, उसको हमारे जीवन में रखेंगे, उसका चित्र मन में रखना, उसी में मन में रखना. Stay in that thing. Every day in the morning we sit and do Krishna Bhagavan ka japa. Choose anything, any Ishta Devata. I am giving an example of Krishna Bhagavan. बेसिकली मौन रहना जरूरी है 24 घंटा में। कितने देर मौन रहना चाहिए कि पिम्मम? Depending on your stress that you generate, you should be able to do. When you have big imbalance, stress you generate. Let us say 100 units of stress you generate every day. Because of your work, because of this thing, and your anger, greed, jealousy, and all that thing. You are very गुस्सा का आदमी है, बहुत जल्दी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, तो 100 यूनिट्स डेवलप करेंगे। पूरा 100 यूनिट्स को कम करना है। उसमें यदि ओनली 70 यूनिट्स अप कम करेंगे और
other 30 units, it will hit you. You may get spondylosis, you may get diabetes, you may get heart problem, you may get stroke, anything can happen. So you have to release all the stresses that you produce. That depends on that. Everybody is different. Now, if I have my own thing, बहुत गुस्सा करने का है, गुस्सा को कम करने का करना पड़ेगा. नहीं तो गुस्सा से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है. It said how much of energy is lost, somebody calculated. If we become very angry for 5 minutes, how much of energy is spent? Equal to running 3 miles. My God. इतना गुस्सा, इसलिए गुस्सा को कम करना है, तो इस ढंग से हमारा जो गुस्सा होना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमत्सर से ये सब हमारा आसुरी संपत्ति बताया जाता है, दुश्मन बोलते हैं, षड्रिपु बोलते हैं, इसको कम करना, इससे स्ट्रेस ज़्यादा होता है, उसको कम करते जाना, शांतता को डेवलप करना, इसको मन को शांत करने का उपाय, रोज ध्यान करना है, सुबह भक्ति मार्ग में या अपने इष्ट देवता को लेकर उसमें ध्यान करना है. जो आप चाहते हैं वो इष्ट देवता को ले सकते हैं, कुछ लोग कृष्ण भगवान को, कृष्ण राम को, कृष्ण को, ऐसा क्राइस्ट को ले सकते हैं, मोहम्मद को ले सकते हैं, जो भी ले लो, कोई बात नहीं, परंतु मन को उसी में लगा देना. सिंगल थॉट, रिलैक्सेशन, calmness and slowness. When you slow down the mind, go to sleep. No sleep, sir. Wakefulness and mind should expand. These are the 5 features of dhyana. Single thought, slowness, effortlessness, wakefulness and expansiveness. These are the 5 features of dhyana. वो करेंगे, stress at the mind level, आदि start coming down. Every day you must practice. Therefore, you say that every day, at least about half an hour you practice in the morning. In the night, if you do that, it will be good. Meditation. But if you find it very difficult to do the meditation, then avartan dhyan. It is simpler, easier, and they can do, because it has got asana, it has got pranayama. You cannot do that also, to only do pranayama. Every day you do about half an hour of pranayama. That also will help. Depending on what is your choice, you can do. Like this, what you have to do is, the imbalance has to be set right. If you don't do the imbalance set to this thing, then problem will not be solved. That's why yoga is samatvam yoga uchyate. Yoga is to bring balance. Balance at the body level, at the prana level, at the mind level, at the emotional level, we have to bring the balance. That is the whole essence. गुरु जी, क्या चैंटिंग, कुछ लोग कहते हैं कि ओम चैंटिंग भी, दैट ऑल्सो मेक्स पीस ऑफ आवर माइंड. हाउ डू यू बिलीव सो? Yes, that also goes. Patanjali has given, So he says, Tasya Vachaka Pranavaha. Ultimate reality is Om. So what is to be done? Tad Japaha Tadartha Bhavanam. By doing the Japa, Om, 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 क्या होता है? All other thoughts will be brought into a single thought. You have hundreds of thoughts, they will all come to only one thought. That's the Om. Yes. Then you must do it effortlessly. Do it. Om, 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 Om. ऐसा करेंगे, then stress is there still. Om, Om. हंसते हंसते करना, slowly करना है, effortlessly करना है, करते जाना. Then the mind will do. When you start doing that, Om, Om, no sleep. Sleep चले जाएंगे. When you do that, slow down, you will do that. That's the nature. When you slow down the mind, it goes into sleep. You should not allow going into the sleep. You must keep awake. Then you start increasing. Om, 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 Om. This is how we do that. Then Hanuman, Ram, 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 Ram कर रहा था. Ram, Ram, Rom, Rom में Ram, Ram चल रहा था. So it is not only chanting in the mouth or listening in the head. The whole body should vibrate. That's called complete resonance. That is the dimension. So in modern times we call it as resonance. पुराने काल में उसको रोम रोम में राम नाम चल रहा था. रोम रोम में होना. Every cell in the body vibrating with this thing. That's the resonance. So when you chant Om, Om, from toes to head you must feel the Omkara. This is the next step in the thing. Then the whole body will wonderfully relax and you will get wonderful relaxation.
Om is a wonderful thing. But some people say that Om is only Hinduism, we should not talk. It's a science, you know. So we say, okay, don't worry. You start with chanting the three components, and then combine them together. You know, then also it is going to come. Then you will understand what it means. Yeah. You know, Akara in the lower portion, there is the frequency. Ukara in the middle portion, Makara in the higher portion. The three frequencies. When you join together, you got the vibration. So we have developed a technique called mind sound resonance technique. We'll do that thing. Very popular thing. तो गुरुजी ने बताया कि अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल है तो आपको गुस्सा नहीं करना है। दिन में कम से कम एक बार आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को मौन भी रखना है, आपको योगा करना है, ओम चैंटिंग करना है। उन्होंने ये भी बताया जैसे भगवान हनुमान जी स्वयं राम 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 जब कहते थे तो उनको पूरा रोम रोम में शरीर में राम हो गया था। ओम चैंटिंग करते तो कंसंट्रेटिंग द माइंड, बॉडी, सोल एंड माइंड, उनको इकट्ठी करना। और जब हम चैंटिंग करेंगे तो उस समय वी विल नॉट अलाउ अदर थिंग्स टू कम टू आवर माइंड। ऑल्सो जब हम योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो हम चैंटिंग करेंगे तो हम उस वक्त सोना नहीं है। वी हैव टू मेड आवर सेल्फ अवेक। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का ये कुछ की पॉइंट्स, की सॉल्यूशंस जो गुरुजी ने, डॉक्टर एच.आर. नागेंद्र जी ने हमारे सामने रखा है, मैं समझता हूँ हमारा दर्शकों के लिए ये बहुत आवश्यकता पड़ेगा। आगे और विषयों पर हम गुरुजी से फिर बात करेंगे अगला एपिसोड में। नमस्कार। धन्यवाद।